Hello dear students, today we are going to start our next topic, disease causing microorganisms and viruses in animals. Dear students, like us, animals also suffer from diseases. Diseases of dairy animals are broadly classified into the following categories. First one is parasitic, infectious, and third one is non-infectious. And an animal suffering from any disease show the following symptoms. First one, becomes inactive and stop taking food. Second, watering in eyes and excessive secretion of saliva. And third one is its milk yield, egg laying and working capacity gets ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. उनका दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, कम दूध देते हैं जो डेयरी एनिमल्स हैं. उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, काम कम करते हैं वो. एंड जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो एग प्रॉपरली ले नहीं करते. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरासाइटिक डिजीजेस. पैरासाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड मेक इट वीक. उनको कमज़ोर कर देते हैं पैरासाइट जिसकी बॉडी पे रहते हैं. एंड द पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो बाहर रहते हैं एनिमल की बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, वो स्किन डिजीज़ मेनली करते हैं. सेकेंड वन इंटरनल पैरासाइट्स सच एज वॉर्म्स लिव इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन. वो पेट के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, एंड thus make the animals weak. Now students, we will discuss about the infectious diseases, and these are mainly caused by bacteria and viruses as you can see in table. So we will discuss one by one which one caused by virus and which one caused by bacteria. As you can see, first one is a disease pox, and animal affected cow, buffalo, sheep, goat and causative organism virus. जो पॉक्स है, जैसे हमारे पॉक्स हो जाती है तो एनिमल में भी होती है, और वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से. सेकेंड वन इज डर्मेटाइटिस. इट इज़ कॉज ड्यू टू वायरस एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन गोट एंड शीप. इट्स सिम्टम्स आर मेनली ड्राइड स्कैब्स. स्किन के ऊपर जो है, स्किन जो है रूखी सी पड़ जाती है और उसके ऊपर जो है स्कैब से बन जाते हैं. थर्ड वन इज़ फुट एंड माउथ डिजीज़. इसका हमने डिस्कस किया था पहले भी, जिसको मुंह कोर बोलते हैं. इट इज़ मेनली फाउंड इन कैटल्स एंड इट इज़ अ वायरल डिजीज़. Next one is the cholera. It is a bacterial disease and found mainly in poultry birds. Similarly, diarrhea of chicks. It is also a bacterial disease and found in poultry birds. Next, sixth one is the tuberculosis. It is a bacterial disease and found in mainly cattle and birds. Next one, rinderpest. Rinderpest shows the symptoms like fever and diarrhea in animals. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेग. इनको कैटल प्लेग के नाम से भी जाना जाता है. एंड आवर लास्ट वन इज़ एंथ्रैक्स एंड इट्स सिम्टम्स आर फीवर एंड स्मॉल बम्प्स अंडर द स्किन और अल्सर वी कैन सी. इट इज़ फाउंड बोथ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स एंड इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़. Next students, some symptoms of foot and mouth disease they are mentioned. First one is excessive salivation, एंड सेकेंड रेडिश ग्रेन्यूल्स अराउंड द फुट एंड माउथ ऑफ द कैटल्स. जो कैटल्स हैं उनके माउथ के अराउंड और फुट के अराउंड रेड बाउंड्स हो जाते हैं, ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं रेड कलर के. नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट द एनिमल्स फ्रॉम द डिजीजेस. फर्स्ट वन, प्रॉपर सैनिटेशन. अच्छी उनके सैनिटेशन का प्रबंध होना चाहिए. डाइट कंट्रोल, अच्छी डाइट देनी चाहिए उनको, प्रॉपर रेस्ट उनको देनी चाहिए. यूज़ ऑफ वेटनरी सर्विसेज, डॉक्टर को बार बार चेकअप करवाते रहना चाहिए एनिमल्स का. एंड एक्सेसिव वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए एनिमल्स की. जो भी प्रॉब्लम है उस बीमारी से रिलेटेड उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए. Now dear students, we will discuss about the disease in plants. Actually we have discussed these topics in first chapter. So quick recap we will do just. So take a look on the next one table. The related disease to the related plant we will discuss. The very first one is a rust. It is found in mainly wheat. It is a fungal disease spread through air and seeds. Second is smut. It is found in wheat. Fungal disease and spread through air and seeds. Third one is the blast. It is found in paddy and fungal disease. It is spread through air and rain. बारिश से भी हो सकता है. Next is citrus conker. It is found in mainly orange crop. Bacterial disease it is and spread through air. Yellow vein mosaic. It is found in okra pindi जिसको बोल देते हैं. It's a viral disease and spread through insects.
Now, dear students, next one topic is food poisoning. Of food, if not stored properly, gets spoiled due to the action of enzyme. एंजाइम का एक्शन कब होता है? जब वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन हो, तो उसमें जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो ग्रो होना शुरू कर देती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है खा के फूड को, एंड द फूड सो स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स और बाय टॉक्सिन्स कॉजेज द फूड पॉइजनिंग। और वो फूड जब हम खाते तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं हमारी बॉडी में? एज यू कैन सी इन दिस पिक, फर्स्ट वन इज नॉइज़ा, उल्टी आना जिसको हम बोल सकते हैं, फीवर बुखार हो जाना, डिजीनेस चक्कर जैसे, हेडेक, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया, बार बार दस्त खाना। Now student we will discuss about the bacteria those causes food poisoning. First one is salmonella, this one is a bacteria, and next one staphylococci, clostridium botulinum and aspergillus. Dear student, these bacteria and fungus produce the toxins in food and causes food poisoning. सेकंड, द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड, जो हम ग्रेन वगैरह खाते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं हम क्रॉप्स पे, तो वो उसके कुछ ट्रेसेस बच जाते हैं, वो हमारे फूड में चले जाते हैं, वही हम कंज्यूम करते हैं। लास्ट वन इज़ द मेटल साल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फूड विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल्स, जो हम खाना पकाते हैं या कई बार हम पिक्कल डाल लेते हैं यूटेंसिल्स में, एंड उसमें क्या होता है, जो मेटल और साल्ट की रिएक्शन हो जाती है और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, और वही फूड जब हम खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट, हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ पेरिशेबल फूड इज prevented using chemicals or physical method is called food preservation. And very first one method is by cooling. The spoilage of food such as vegetable, meats, fruits, etc. uh, can be prevented by keeping them at the low temperature, and the low temperature prevents the spoilage of food because it retards the growth of bacteria की growth नहीं हो पाती, and it inactivate the enzymes, those enzymes which can spoil the food वो activity नहीं हो पाती। Second method is pasteurization, and this method was developed by Louis Pasteur, and it was developed for preserving milk. Now, these days, many food items are preserved using this method. In this method, milk is heated firstly about 60 to 65 degrees Celsius for about 30 minutes to kill the bacteria present in it, and then by cooling it quickly to prevent the remaining bacteria from growing. द मिल्क इज़ देन फिल्ड इन टू स्टेरिलाइज्ड बॉटल, बॉटल में बाद में इसमें फिल किया जाता है, पहले हीट करके फिर उसको कूल किया जाता है सडनली। नेक्स्ट मेथड इज़ डिहाइड्रेशन, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वेजिटेबल्स में और फ्रूट में से जो वाटर को सन ड्राई करके रिमूव कर दिया जाता है, एंड बाय सन ड्राइंग वी कैन प्रिवेंट द फूड आइटम्स लाइक कॉलीफ्लावर, स्पिनच, फेनोग्रीक जिसको मेथी बोल देते हैं, जिंजर। And next one method is by smoking, like fish and meat we can preserve these items by smoking them. Next method is by using salt and sugar. By using high concentration of salt in food items, remove the water from the food material. 15 to 18% हमने salt डालना है food items में, and this retards the bacterial growth to prevent the food spoilage. Second, by adding sugar more than 68%. Sugar also retards the bacterial growth and prevent food from spoilage. जैसे आंवले का मुरब्बा हमने देखा होगा, एप्पल का मुरब्बा भी मिल जाता है, तो ये इसी मेथड से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स इज बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. दिस आल्सो डू नॉट परमिट द बैक्टीरिया टू ग्रो ऑन द फूड आइटम्स एंड दस प्रिवेंट अवर फूड आइटम्स. ये हमारी फूड आइटम्स को बचाने में मदद करता है. ऑयल एंड विनेगर, साथ में थोड़ी सी स्पाइसेस हम डाल देते हैं, तो उससे भी हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो सकता है. नेक्स्ट मेथड इज बाय हीटिंग एंड कैनिंग. In this method, firstly, food items are heated up to 110 degrees Celsius for about 30 minutes to kill the microorganisms. Then after it is canned in containers. उसके बाद इसको canning इसकी की जाती है, and by this method food remains safe for a longer period. With the help of chemicals, we can preserve our food items also, like sodium benzoate, and this is used for preserving fruit juice and squashes. Similarly, potassium metabisulfite is used for preserving
cut fruits, jams and jellies, etc. Dear students, last method to preserve the food is vacuum packing, and in this method the air from the packages is removed by evacuation and flushed with the oxygen free nitrogen. पहले इसमें से एयर निकाल देते हैं, उसमें उसमें बाद में नाइट्रोजन फिल कर देते हैं थोड़ी सी, उससे क्या है फूड आइटम ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं. Now, dear students, these methods we have discussed to preserve the foods. Now, what are the advantages of the food preservation? We will discuss. First, it decreases the food wastage. Food waste नहीं होता, जितना चाहिए पैकेट में उतना ही हम खरीद सकते हैं. Second, it increase the storage period of perishable food material, क्योंकि स्टोर रहता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ग्रो नहीं कर पाते इसमें. थर्ड, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल. जो सीज़न में नहीं है हम वो भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये अवेलेबल रहते हैं. इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ए पेरिशेबल फूड मटेरियल इवन एट द डिस्टेंट प्लेसेस. दूर के स्थानों पर भी जो ऐसे फूड आइटम्स है जल्दी ख़राब होने वाले वो ख़राब नहीं होते और दूर के स्थानों तक भी हम उनको पहुंचा सकते हैं. Now, dear students, and there are few questions related to today's learning. Please try to attempt these questions at home. Thank you.